Hi everyone, my name is Bhupesh. Recently, me, my wife Medha, along with our son Shaurya and daughter Vivika, we moved to UK on skilled worker visa. When our the plan to move to UK was finalized, उस समय हमने ये देखना शुरू किया था वेरियस फेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अपने फ्रेंड्स जो कि यूके में थे कि हमें कौन सी फ़्लाइट लेनी चाहिए, हमें इनिशियली कहाँ रहना चाहिए, हमें अगर एयरपोर्ट से अपने टेम्प्रेरी स्टे तक ट्रैवल करना है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा फ़ोन नंबर हमें लेना चाहिए, रेंटल का मार्केट का सीन क्या है, कितना मनी लेके आना चाहिए, बच्चों के स्कूल का क्या होगा. सो वी हैव ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. We did our own research and we found that each and every information is available in public domain on Facebook groups, Instagram. पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन वॉज स्कैटर्ड, इट वॉज इन बिट्स एंड पीसेस. सो वी थॉट बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस let us create a video where we can put all the points about the things what you should do before you plan to move to UK. So the very first thing what we looked for was flight. Which flight we should take if we are traveling to Leeds. So at that point of time, we started looking for the first was to look at the flight which gives you the best option about the price and the baggage allowance. So we found that there are some direct flights from Mumbai to Leeds, from Mumbai to Manchester. But again, with those flights, the baggage allowance was pretty small. For example, for Qatar Airways का ऑप्शन था हमारे पास, जिसमें हमें हर एक पर्सन के ऊपर सिर्फ एक चेक इन बैग और एक केबिन बैगेज का अलाउड. And since we were moving on a long-term plan, we wanted to carry a lot of items from India. बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम लाना चाहते थे वहाँ पे. Then we started doing some more research and we found that instead of getting a direct flight, अगर हम मैनचेस्टर जाने के लिए अगर हम via London जाएं, we can get a very good deals over there. And we found that British Airways was the best price to the benefit ratios के हिसाब से that was the best option for us. So it totally depends upon you. If you want to carry some luggage, the best option would you be for you should be वो एयरलाइन जो आपको सबसे ज़्यादा बैगेज अलाउंस देती है. अगला क्वेश्चन आता है कि आपको अपने सबसे पास के एयरपोर्ट पे जाना चाहिए और यू कैन गो टू एनी एयरपोर्ट एंड देन ट्रैवल इट फ्रॉम प्लेसेस. आई हैव सीन पीपल जिनको लीड्स आने के लिए दे यूज्ड टू गेट डाउन एट लंडन, they will get on a taxi or on a train and then they will travel to Leeds. But in our condition, we were traveling with family, we had a lot of luggage, so we thought Manchester would be the right airport for us. And since we were coming into connecting flights, there are few factors which you should consider. Current scenario में लंदन में या यूके के किसी भी एयरपोर्ट पे the rush is very high, the economy is opening up, a lot of people are coming in. At the same point of time, there's a shortage of staff at most of the counters. So when we came in Feb, doing immigration in Heathrow, at Heathrow Airport, we realized that out of 8 or 9 counters, only one was working, and it was serving for UK residents and non-UK residents both. So it took us close to 3 hours to clear the immigration. और हमारी जो दूसरी फ्लाइट थी उसमें सिर्फ 2 घंटे का गैप था. बट जब हम वो फ्लाइट बुक कर रहे थे तो आई हैड एन आइडिया कि अगर मेरी ये फ्लाइट मिस भी होती है तो आई हैव एन अगेन मेरा ब्रिटिश एयरवेज के लीड्स के मैनचेस्टर के लिए दूसरी फ्लाइट सिर्फ 2 घंटे बाद है, एंड वी विल ईजिली बी ट्रांसफर्ड इन टू दैट वन, एंड द सेम थिंग हैपेंड ओवर देयर. सो व्हेनेवर यू आर प्लानिंग दिस काइंड ऑफ ट्रैवल, कीप दिस थिंग इन माइंड. The next most important thing when you start looking for this thing is about your initial temporary stay. Now it's totally up to you. So you have an option of hotels जहाँ पे आप जाके रह सकते हैं. You can search it through booking.com to get a pretty good deals over there. There are options for serviced apartment. There is option for Airbnb. So each of them has their own pros and cons. जब हम आ रहे थे, we wanted to, since we were traveling with 2 kids, we wanted to have a big place जहाँ पे बच्चे थोड़ा आराम से रह सकें और हम भी ऑफिस का काम कर सकें. उस समय हमें यहाँ पे एक अपार्टमेंट होटल्स के बारे में पता चला था. सो वी रीच्ड आउट टू देम एंड वी आस्क्ड फॉर द प्लान्स. सो we selected apart hotel and which is pretty good. It gives you the feeling of hotel. जैसे आपको वहाँ पे आपके लिए डेली क्लीनिंग के लोग आएंगे, आपको वहाँ पे
You will get a grab and go breakfast sort of thing you might get over there. और साथ में साथ वो पूरा एक 2 bedroom अपार्टमेंट आपको वहाँ पे मिलता है. It could be 2 bedroom, 1 bedroom based upon your requirement. And when you are considering these kind of things, so you have to look for many things. अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो you should look for how many rooms you want. Trust me, keeping the 2 growing kids in 1 hotel room is going to be troublesome. So आप वो देखिए कि आपको कितने रूम्स वहाँ पे मिल रहे हैं. सेकेंड थिंग आप ये देखिए कि जहाँ भी आप रुकने वाले हो वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कनेक्टिविटी कैसी है. आप शुरू में आप आओगे, अगर आपको ऑफिस जाना है या आप कुछ भी चीज़ें लेने जानी है तो वहाँ से आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, कितना टाइम लगेगा, बस स्टेशन कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है वहाँ से, वो चीज़ें आप देख के रखो. और साथ में आप ये भी देखो कि आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम टू एंड फ्रो प्लेस ऑफ वर्क कितना है वहाँ पे. व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू एनी ऑफ दीज, बी इट होटल और अपार्ट होटल और सर्विस्ड apartment, always talk to them with an option of extension. The rental market is very weird in UK, or trust me, there is a very high possibility that you might have to extend your stay in the apart hotel or the hotel wherever you want to. So just to give you an example, when we started looking about moving to UK, so हमने एक दो apart hotels को reach out किया जब हमें, so we got a very good deal. तो इनके साथ ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपका स्टे जितना भी लंबा होगा, यू विल गेट बेटर डेली रेट्स. So when we booked it, we got a rate of £60 per day, and that was for 2-bed apart hotel, where the breakfast was basically included in the package. We did some research and I realized that we might have to extend the stay. So when I got in touch with those the service providers, I told them that what if I opt for 28 days, अगर मुझे पहले खत्म करना है तो what will be the options, or in case I have to extend my stay, what will be the options. So we discussed about that and they gave me a certain cutoff period. If you inform us by that time, right, we can refund your amount or we can extend you on the same rates. So this came very handy to us because मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हर हफ्ते के हिसाब से बुक करते थे, and the rates keep on increasing. They started booking at £120 per day, then it went to 140 and then to 160 to 180. So if you are planning it that way, always go with the longest possible duration and ask them for अगर मुझे जल्दी छोड़ना हो तो at what time I have to inform to get the refund. So just to give you some idea, few service providers are Rooms Apart Hotel. They have hotels all over the UK, service apartment basically. There's one called as Stay City, Sacco Apartment. But in my opinion, if you go with an aggregate you might get even a better rates. In our condition, we went ahead with a Silver Door apartment. The rates what I got was much better than what I could have got with Rooms Apart Hotel directly. So do your homework properly. If you have any questions on that one, which area you want to stay, which hotel, which service apartment you are looking for, how to get the best deal out of it, just drop a comment over here and I'll try to answer your questions the next point is traveling from airport to the initial temp stay. So there are two options. You can get a public transport. UK के जितने भी airports हैं, be it London, Manchester, Leeds, Bradford, or all the airports are very well connected with the public transport. आप वहाँ से आराम से ट्रेन या अपनी बसेस ले सकते हो. And in case you are carrying a lot of luggage, there is an option of paying extra luggage as well. Or the option is you can go with a private hire. There are many private service providers whom you can go with that. So there are many airport shuttles. There are many websites which provide you the taxi services, minibus services, and you can use that. And apart from this, you even have Uber. But if you are booking this thing well in advance, you might get a better rate. So and yes, if you are coming from India, we do understand that you might be coming up with a lot of luggage. So it's always, in my own personal experience, it is always advisable to book a big vehicle in advance to get a better rate and to maintain the peace of mind. In our condition, when we started looking for everything has been finalized that we are going by this flight, it will reach to Manchester at this point of time. We started looking for the taxi options. So we did some search on the group, basically on the web. We got some references over there, and then I asked the same thing in the Facebook groups, asking about which is there anyone who's providing you the
who can provide you taxi services from Manchester to Leeds, and I got some very good leads over there. So it's totally up to you, but I would suggest whatever your plans are, try to book well in advance and you might get very good rates. And one thing, if you are planning to submit your bills to your employers, in that condition, the only worry point is if you are going with someone private, you might not get the VAT bills. So be very clear on that front, but book well in advance and plan your everything accordingly. The next thing is always keep an active phone number. So many times if you are coming to UK, you might be going through the VFS services, and whenever you go for a visa over there, they will provide you one free SIM card, and in most of the cases it's Lebara, and it is more than sufficient. It's pretty good, I would say, for the initial uses. So with this one, you'll be able to make your phone calls, you'll be able to use the internet in just in case you want to get in touch with your cab driver, just want to make them understand where you are so that he can come to pick you up. So these things would be pretty easy for you to do. Always make sure that whenever you are traveling, your Indian number is working at least for the initial few days. Many times we wanted to do some transaction and we realized that जब OTPs आते हैं वो कभी भी हमें मिलते नहीं, because हमारे नंबर पे या तो इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेटेड नहीं होती या तो हमारा नंबर इंडिया का नंबर यूके में चल नहीं रहा होता. So the best way is to get a minimum activity plan. For an example, in our condition, I have two numbers. एक Jio था मेरे पास और दूसरा मेरे पास Vodafone था. So Jio I got activated for a month, and same thing I did with my Vodafone number. And after that, I keep on getting the SMS and everything, the OTPs and everything upfront. So always make sure that you have one active phone number which you can use to call the service providers in and around UK when you land. The next thing is money. It should be in form of cash and in form of the forex amount as well. If you ask me, £1,000 cash के form में or almost 2,000 to 3,000 pound in the form of forex card would be more than sufficient for the initial stays. And if you have an HSBC bank account in India, or if you are in India and you still not travel to UK, you can reach out to a bank. You can ask them to open you a non-resident account in India, and with this, at the same point of time, they can even open you a local account in UK without coming to UK, before coming to UK. And there are no service charges for this thing. So this comes very handy just in case अगर आपने घर के लिए रेंटल के लिए कहीं अप्लाई किया है, आप 5 weeks का एडवांस ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे, तो ये चीज़ें काफ़ी हैंडी होती है वहाँ पे अपने खुद के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करना. अगर आप यूके आ चुके हैं, आपके पास HSBC का अकाउंट नहीं है, then the second option what you have is opening Monzo, Revolut और Starling बैंक अकाउंट. In our condition we struggle a bit with Monzo क्योंकि जो हमने एड्रेस डाला था, it was as per their record it was considered as business address, वो rooms apart hotel का, so they took it as a business hotel and we were not able to get our cards over there. But Revolut it took our address and it delivered my card in 2 to 3 days time, so everything was working at our end. And while traveling, always inform your Indian bank about your travel plans. कहीं ऐसा ना हो कि आपने कभी मजबूरी में अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की कोशिश की और उनको लगता है कहीं और यूज़ हो रहा है, and they will block the card. Informing them is always better. Now the other things what you can start looking from India is the rental properties. So very first thing what you have to decide is in which area you would like to live, and the best way to look to ask questions from the Indian diaspora who जो भी UK में हैं या आप जिस एरिया में जाना चाहते हैं वहाँ हैं, तो बेस्ट तरीका होता है कि आप वहाँ का फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें. फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमने इंडियन इन लीड्स करके था, वो हमने ज्वाइन किया था. एंड वी आस्क वर क्वेश्चन दैट कि इफ अ फैमिली इज कमिंग विद 2 kids, मेरा बेटा सेकेंडरी में है, मेरी डॉटर प्राइमरी में है, तो विच एरिया वुड बी द बेस्ट और कहाँ पे सबसे अच्छे स्कूल्स मिलेंगे. तो उसके बेसिस पे सबसे पहले हमें 3 या 4 ऑप्शंस मिले थे, तो उन्होंने हमें रिकमेंड किए. देन वी वेंट बैक एंड वी स्टार्टेड डूइंग आवर ओन रिसर्च लुकिंग इनटू द एरियाज, विच एरियाज आर बेटर फॉर किड्स, विच एरिया हैज़ अ लो क्राइम रिकॉर्ड, कहाँ पे ज़्यादा अच्छे स्कूल्स हैं, बेसिकली सेकेंडरी स्कूल्स कहाँ पे ज़्यादा हैं और वहाँ कहाँ एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो बेस्ड अपॉन दीज थिंग्स वी फाइनलाइज द एरिया वे आर लिविंग. एंड at the current point of time, the rental market in UK is at all-time high, and what we call it as a landlord market. So आज के दिन में यहाँ पे अगर एक रेंटल प्रॉपर्टी का एडवर्टीजमेंट आता है तो उस पर 4 से 5 एप्लीकेशंस नॉर्मली पड़ती हैं, एंड द
process is quite cumbersome, at least at this point of time. So whenever you are looking for area, always look, try and select area where you have some good to very good schools. तो यहाँ पे यूके में हर एक स्कूल की रेटिंग होती है ऑफस्टेट के बेसिस पे। आप उनके वेबसाइट पे जाके जिस एरिया में भी आप रहना चाहते हो वहाँ पे कौन कौन से स्कूल्स हैं, उनके रैंकिंग्स क्या है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो। सेकेंड थिंग, लुक फॉर द कनेक्शन टू द लोकल ट्रांसपोर्ट। बसेस कहाँ से मिलती हैं, आपका बस स्टेशन कितनी दूर पे है, आपका रेलवे स्टेशन कितनी दूर पे, इन केस यू वांट टू ट्रैवल बाय local transport. Many times I've seen friends who wanted to live very close to the Indian diaspora. So do you want, so there are certain areas जहाँ पे आपको काफ़ी सारे Indians साथ में रहते मिल जाएंगे आपको. If that is your priority, you can get that information as well. And then think about which area could be the safe for family, which have good access to the parks, to the gym and to other areas. So ये सारी चीज़ें आप consider कर सकते हो. अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज यू आर लुकिंग फॉर। तो इन यूके देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेज। यहाँ पे आपको टेरेस्ड हाउसेज मिलेंगे, फिर आपको यहाँ पे डिटैच्ड हाउसेज मिलते हैं, सेमी डिटैच्ड हाउसेज मिलेंगे आपको, फिर आपको यहाँ पे बंगलो मिलेंगे, देन देयर आर फ्लैट्स, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल ओवर हियर एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप क्या देखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे थ्री बेड हाउस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आपके वो लिविंग रूम, किचन अलॉन्ग विथ 2 bedrooms एंड 1 बॉक्स रूम के हिसाब से मिलेगा। सो ट्राई टू चूज बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, क्या है, कैसे है, कितने रूम्स चाहिए आपको। इफ यू बोथ आर वर्किंग फ्रॉम होम, अगर आप घर से काम करना चाहते हैं, यू माइट नीड टू हैव अ ऑफिस स्पेस फॉर यू, सो ऑलवेज लुक फॉर दैट थिंग। द सेकेंड थिंग इज अबाउट furnished house and unfurnished house. In our experience, the houses what we look for, most of the houses were unfurnished. And when I say unfurnished, they were bare. कुछ भी नहीं था वहाँ पे, सिर्फ आपको नीचे कारपेट किया हुआ मिलेगा. That's all. So most of the things you can even start looking for these options from India as well. But a word of caution, always make sure आप घर को एक बार फिजिकली देख के पसंद करो। भी आप साइट पे जाओ, खुद से देखो। हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जो कुछ घर हमें बहुत पसंद आए, जब हम घर के अंदर घुसे तो पता चला वो घर तो शुरू होते ही खत्म हो रहे थे। द रूम्स वर वेरी स्मॉल एंड इट लुक्स ह्यूज इन द इमेजेस। व्हेन आई आस्क्ड द लेटिंग एजेंट, ही लाफ्ड एंड ही सेड किसी वी शूट वाया द वाइड एंगल कैमरास, राइट। तो उसकी वजह से आपको वो हमेशा बड़े लगते हैं। सो माई ओन एक्सपीरियंस के हिसाब से आई वुड सजेस्ट गो हैव अ लुक एंड देन डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। एंड द रेंटिंग प्रोसेस इन यूके इज़ नॉट दैट ऑफ इंडिया। इंडिया में नॉर्मली क्या होता है, वी सॉ हाउस, हमें पसंद आया घर, हमने सीधे लैंडलॉर्ड को रीच आउट किया, हमने रेंट नेगोशिएट्स किए एंड वी आर डन। In UK, the process is slightly different. So most of the advertisements will come on these websites. Zoopla हो गया, Rightmove है, On the Market है. There are other aggregators जिनकी खुद की भी वेबसाइट्स है. For example, Dan Pierce Sells Home हो गया, आपका Rightmove है वहाँ पे. तो अब इन सबकी वेबसाइट पे जाके based upon the area what you are looking for, you can look for the houses. You have viewed a house, you liked it. After this, आपको एक अपने letting agent को बताना पड़ेगा that you have liked the house. And then he will send you a form. Basically, that form contains, they will ask you information about you and how many people are going to stay in the house, main occupier कौन होगा, rent pay करने वाला कौन होगा, what is your job role क्या है, आप किसके साथ काम करते हो, किस टाइप के वीज़ा पे हो, आपकी सैलरी कितनी है। आपसे एप्लीकेशन लेके नॉर्मली आपको जो लेटिंग एजेंट होगा वो ये इन्फॉर्मेशन देगा लैंडलॉर्ड को। करंट सिनेरियो में एक प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, 4 या 5, 6 लोग अप्लाई करते हैं एक ही एप्लीकेशन के ऊपर, एक ही घर के ऊपर। सो कई बार ऐसा होगा कि लैंडलॉर्ड डिसाइड करता है कि उसे किसको रेंट पे देना है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें जो प्ले करते हैं। वो ये भी देखता है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है, वेदर आप घर को रेंट पे ले रहे हो तो आप पे कर पाओगे कि नहीं पे कर पाओगे। तो सारी चीज़ों को देखते हुए लैंडलॉर्ड डिसाइड करता है कि किसको उसे हाउस रेंट पे देना है। एक बार जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो गया नॉर्मली, तो फिर आपको 5 वीक्स का नॉर्मली एडवांस पे करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी कॉमन रूल इन यूके। एंड देन यू कैन मूव इन टू द हाउस आफ्टर साइनिंग द शॉर्ट टर्म टेनेंसी एग्रीमेंट साइन करने के बाद। हमारा एक्सपीरियंस जब हम आए थे, हमें एक घर आते ही बेसिकली 1 वीक के अंदर ही हमें पसंद आ गया, देन एवरीथिंग वेंट प्रीटी स्मूथ। When we went, we did the payment, हमने बिलिंग की, हमने अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, since we both were working, तो हमारा प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हुआ था।
बट जैसे ही हमने एप्लीकेशन डाली, एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गई। हम जब अग्रीमेंट के लिए जा रहे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी रियलाइज दैट द हाउस फेल इनटू ईपीसी रेटिंग। यूके में to rent a house, minimum rating should be E. It was an old Victorian house built up in 1850 and failed into EPC rating. So there were two options. Either the landlord should work on the property, make it better, or we would have to look for another option. हमें बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन मिला था। हमने अपना एक्सटेंशन जो था गेस्ट हाउस का, अपना अपार्ट होटल का, वो हमने एक्सटेंड किया। And then we started looking for another house. We were lucky enough to find a house in next 1 week time, and we were able to move it over there. So whenever you are starting the process, always bear in the mind, process could be cumbersome, it could be frustrating sometimes, but at the end you will find what you are looking for. Coming to the question, what I have seen, most of the parents have asked on the Facebook group. It is about the school admission process in UK. मेरी बेटी को स्कूल में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इमिग्रेंट्स को जो बाहर से आते हैं उनको स्कूल में एडमिशन कैसे अलाउड है नहीं है। So in UK, everyone has a right for education. So if you are a legal immigrant, if you are in UK, your kid or daughter son or daughter, they have a right for education. Now coming down to schools, type of schools, यहाँ पे नॉर्मली दो तरीके के schools होते हैं। एक होता है आपका council school, which is called as a government school, and the second one is a private school. For private school, if you want to get into private schools, you have to reach out to the school, drop them an email or fill the online forms. Once they have their information, they will reach out to you via phone or via email, asking you about some more details about your plans to come into UK, and then you can fill up the form over there. जब आप UK आते हो, वो आपको टेस्टर डे के लिए बुलाते हैं वहाँ पे। They will show you the whole school. एक बच्चे का छोटा सा एग्जाम लेंगे, if gets passed, he will be in the school. Or admission into the council school, the process a bit different. At first, you have to reach out to your the local council. आपको उन्हें अपना उनको आप एक email डाल सकते हैं. You can get their details on their website. You can drop them an email, asking them, telling about your kids and in which year you want an admission. Most of the time, they will send you a form to fill in and then ask you to put in the details for 5 schools where you want to apply for. जब आप एक बार एप्लीकेशन भर के भेजते हो, वो 5 स्कूल्स को आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती है। अगर उन स्कूल्स के पास डायरेक्टली स्पेस होती है और बच्चों को लेने के लिए, तो आपको तुरंत कॉल आ जाता है स्कूल से। अदरवाइज दे पुट योर किड ऑन अ वेटिंग लिस्ट। अभी आपके बच्चे को स्कूल ने वेटिंग लिस्ट पर डाल दिया। अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ लॉन्ग दिस वेट वुड बी। क्योंकि अगर आप उनका स्कूल का जब आप लेटर पढ़ते हो, इट सेज कि हमने आपके बच्चे को वेटिंग लिस्ट पे रखा हुआ है और बच्चा आपका वेटिंग लिस्ट पे रहेगा टिल एंड ऑफ द ईयर। और वो आपको साथ में एक राइट टू अपील करके भी एक लेटर देते हैं। आप उसको लेके राइट ऑफ अपील में काउंसिल को आप रीच आउट कर सकते हो। तो नॉर्मली ये देखने के बाद लोग एक बार घबरा जाते हैं, ये सोचते हुए कि दिस वेट माइट बी वेरी लॉन्ग, या बच्चों को बहुत दिन तक स्कूल के लिए वेट करना पड़ेगा। बट नॉर्मली दिस इज़ नॉट ट्रू। इन UK देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड एज फेयर एक्सेस प्रोटोकॉल, और उसके बेसिस पे वो आपको काफ़ी जल्दी एडमिशन वहाँ पे मिल जाता है। देयर माइट बी certain delays because of the school holidays and council working with the schools, but you will get an admission. I'm planning to make a whole video on the system, on fair access protocol and how to use that one, and I will be doing that pretty soon. आपको ये देखना है किन स्कूल में प्लेसेस हैं, उसके लिए आप अपने काउंसिल की वेबसाइट पे जाके स्कूल्स का जो सेक्शन होता है, आप वहाँ पे जाके बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि प्राइमरी स्कूल्स में या सेकेंडरी स्कूल्स में कहाँ पर वैकेंसीज हैं। मेनी टाइम्स आई हैव सीन पीपल जो डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसीज कहाँ पे हैं, वो अपने घर को चूज़ करते हैं कहाँ पे रहने के लिए। हमारे केसेस में हमने उल्टा किया था। मुझे थोड़ा आइडिया था फेयर एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में। आई वॉज श्योर आई विल गेट इन सेकेंडरी स्कूल एंड विल go into the primary school, and I know how to put the applications forward and how. So we chose the location first. हमने जो लोकेशन ली थी, हमारे आसपास तीन सेकेंडरी स्कूल्स थे और सारे के सारे उसमें गुड़िया और आउटस्टैंडिंग रेटिंग में थे। और जो डॉटर के लिए हमने स्कूल लिया था प्राइमरी स्कूल, उस एरिया में क्लोज टू 8 to 9 प्राइमरी स्कूल थे। सो वी वर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि वो चीज़ें हो जाएंगी। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू वेदर यू वुड लाइक टू फिक्स अ पोजिशन फर्स्ट और गेट इन टू अ प्लेस। आप पहले घर लेके तब आप स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बोथ द ऑप्शंस कुड वर्क फॉर यू, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स नॉर्मली अगर आप उनको खुद से रीच आउट करते हो या काउंसिल के थ्रू भी रीच आउट करते हो, अपना एड्रेस होने के पहले UK में मेनी टाइम्स यू डोंट इवन गेट अ रिप्लाई।
or they will simply say that we are putting your kid on the waiting list, and once we have a position, we will reach out to you with an offer. So, but don't get worried. Right of education is there, and using the fair access protocol, most of the city councils or the education department of the city council will offer a school for your kids. And when I say offer a school for your kid, it does not mean that आपके बच्चे को 10 miles or 15 miles अवे मिलेगा. यहाँ पे एक reasonable traveling distance बोलते हैं वहाँ पे. If your kid is till year 7, it would be 2 miles, and if it is above that, it would be 3 miles, and they consider this as a walking distance. अगर आपके पास उससे ज़्यादा है, तो normally they will provide you the transports and other facility as well. So don't get worried about it. At least take that tension off your mind. So this is all from our side today. When we were started looking to move to Leeds, we came across various blogs. ये realize हुआ था कि ये सारे जो channels हैं, they are basically talking about from a perspective of a person who has either moved in UK or talking about the student's perspective. ऐसा हमें ब्लॉग नहीं मिला था जहाँ पे एक जो नॉर्मल वर्किंग कपल हैं या वर्किंग पेरेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स दिखा सके. सो वी थॉट लेट्स पुट अवर पॉइंट फॉरवर्ड एंड ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट you might have faced or you might be feeling while making a decision to move to UK. So this is our small attempt towards that part. Hope you like the video.